voting, the BJP is launching their Sankalp Patra. All right, sort of getting us all of those details. We'll keep coming back to you for more details on the manifesto released by the BJP today. With that report, it's time for a quick commercial break. Here we're getting you much more news on the other side. You are watching India Today. Hello and welcome to this edition's Fashion Edit, the Party Manual. I'm Chaiti Narula and my producer Vaishnavi Gaharwar and I this time around have put together the Party Manual for you because, well, it is the party season and our top story is about how bling is the new black this season, from metallic boots to bling accessories to these blingy capes to these bling dresses and even blingy shoes. All of that is very 2022 party season. Take a look at our top story. Bling is the new black in India this party season. Primarily, that inspiration comes from a global trend of bling being very party season 2022. The latest Zuhair Murad showcase at the Haute Couture Week saw bling outfits that were inspired from mystical arts. Elisab's fall-winter collection is all bling too, with striped sequins bringing bold and elegant movement to relaxed silhouettes with plunging necklines. Back home in India, designers are incorporating bling in their festive edits of 2022.
When you say bling, we get excited. We at Rohit and Rahul are known for bling. We love a surface texturing. We love a shine. Nothing without a shine. And of course, after these 2 dull seasons and 2 dull lockdown years, we are all here to shine. Bling is on. And of course, the cord sets in bling are the way to go this season. This year, I think we are able to celebrate all festivity with our best foot forward. And so bling somehow represents that carefree attitude. Bling is all about, celebration. It's all about shining with your friends, family, your dear ones, near and dear people. So in that way, I really feel bling has a lot more meaning just than being bling for this season. And that is not restricted just for the women, even for the men. When women are all shining bright, then why not men? So, I have seen when photographs are happening, men get left behind. They're looking dull in front of the big on huge gowns and all bling. So this season we decided to add some subtle bling on bling, subtle color on color. We are not going all out, but we are doing black on black luster. We are doing blue on blue luster, which is interesting, and I think men need to shine as well. Men wear a lot of turtlenecks and pullovers. So imagine just putting like a small brooch on it. Looks really, really trendy. Or maybe we can put like a pearl necklace, the boy pearls that we call these days. Just putting like a small necklace of pearls can look really, really trendy and cool. This winter, bling is mainstream. From parties to red carpet affairs and even chic streetwear, bling has become mainstream and being explored in all kinds of color and palettes too. Everyone is embracing maximalism, everyone's embracing conceptual design, experimentation. Well, yeah, wine is a beautiful color, aubergine, dark bottle green. I think subtle, sophisticated colors on men, they always look really amazing. But having said that, there could be somebody wearing a red suit as well. Just suit your personalities. The metallics are here to stay too. Fall winter is even all about the metallic boots with short skirts and plunging necklines. And that sees a great unapologetic mesh with accessories that go all bold and bling. When you're wearing bling on bling, that means there's always a lot of bling on you already. So we will suggest that keep it a little understated. So maybe like muted gold jewelry. In case you love OTT, there's nothing like it. But if you want to keep it subtle because the outfit is already bling, so maybe the jewelry can be a little more subtle. But there is jewelry for every occasion or every outfit. Let's just say, bling is the new black, people. In New Delhi, with inputs from Vaishnavi Gaharwar, Chaiti Narula for India Today. 2022's biggest drop of the party season are opera gloves. Believe it or not, they breathe life into your outfits. They give a distinct character to your outfits. Man, woman, or otherwise, they're rather gender agnostic. And they add so much character to your sartorial success. So this time around, go wild, go experiment. At the end of the day, when you're partying, you're having fun. So why not have fun with your outfits too? Check out our story on the opera gloves comeback. This year has been a lot about feathers, sequins and bling party looks. And now comes the opera gloves to add to that trend. What was once looked as an elitist high society, kind of a straight out of The Crown or Bridgerton look with gloves, is now mainstream with the Gen Z. When I look back in the day, it graduated into some sort of a status symbol amongst women when they would get out. And then now in today's day and generation, where our brand also specifically talks about the diverse nature of our society. So I think it's found its place again in the community. 2022's biggest drop for the party manual perhaps are these opera gloves. Wear them with dresses, jeans, saris, and they're age and gender agnostic. So what has changed from the Audrey Hepburn breakfast at Tiffany days to today when it comes to opera gloves?
how we wear them. That has changed drastically. It's another layer to who you are, just like skin. And I see a certain sense of fluidity in the nature of the garment and the silhouette of the garment. That is what excites me as a technician. Might just bring a absolutely different feeling to the customer or the consumer eventually. They might feel a very different take on it. Our gloves is a major comeback, definitely. And I think it's not anymore about wear what we can wear, So it could just be wearing them with like a t-shirt, or wearing them with a sari, or wearing them with like a jacket, So it's about really styling yourself. It's exciting to sort of style them in a different way. So sort of take something from the history and bring the newness to them is what is really thriving anyway. So I think, that's basically it. We saw Anna Vitiello make a statement at the Milan Fashion Week in September this year, wearing all black with in-your-face orange gloves. Seema Anand recently was styled by Cosmopolitan India wearing these, and increasingly people are taking to this as a statement of sartorial success. And they are truly gender agnostic. You know how it started? It was the symbol of the royal lady and wealth of, showing wealth. It's fashionable and it's becoming more trend. And, other way we can say we are trying to save ourselves. So that can be the reason. In fact, they even serve the purpose of keeping you warm if you live in cooler places where the mercury drops a fair bit in winter. And for the warmer areas, go for the netted ones that give a distinct character to your outfit, men and women both. I would say play with volumes. By that I mean, complete contrasting volumes. Something which is extremely oversized can be paired with something which is not. And then you see how that is looking balanced or not. Then maybe add another layer, maybe reduce another layer. It's literally it's very playful. So go ahead, breathe some life into the same old looks. The possibilities are endless. Go truly creative. In New Delhi, with inputs from Riya Modi and Vaishnavi Kaharwar, Chaiti Narula for India Today. We just showed you how Oprah gloves are 2022's biggest drop, and feathers are back this season. The Marie Antoinette look is back in 2022. They add a lot of drama to your outfits, and just look at that. The feathers and the sequins add a lot of drama to your already existing outfit. So what you could do is take a cape, and this goes for men and women both. So why don't you go ahead and try feathers out this season? Internationally, they're becoming a huge rage. And I have to say that as far as Indian couturiers is concerned, 2023 is going to be the year where feathers are going to be dominating. So why not be ahead of your times and embrace the style in 2022 itself? Drama. Rather dramatic. That's what feathers can do to a dress, top, or even co-ords. Feathered outfits trends continue. If you wish to stand out of the pack, go party in one of these. We love feather, and I think it adds a little bit of luxury, softness to the garments, and I think a mixing of bling, surface, which is matte and shine, and if you add a little bit of feather, it is just adding softness, and I think women love that. I think for fall-winter 2022, I think fashion is all about expression. As a designer, I really feel what I want to express as an artist. When it comes about wearers, when it comes about like people who consume fashion, for them also it's their expression. It is also something which is in tune with how people are reacting right now, because gold brings a lot of positivity, a lot of strength. It's also, color of life. How when sun rises,
everything becomes golden in hue. So somehow it's like starting of first ray of light, it's the starting of life. And at the same time, when you are ending the year, you want to end the year on a higher note. Attending a red carpet gala or a night out for cocktails or black tie affair, Janelle actually shows us the trick feathers can do. This Eliasop haute couture gown shows how feathers can add drama, from the black velvet cutout top to the black, red and anthracite grey feathers. Let's cut. Yeah, feathers seem to be sprouting everywhere, literally. But yeah, ostrich feathers were a big part of couture in the 60s and 70s. Now, I mean, for ethical reasons, people probably frown at the idea of real feathers. But there's also lots of faux feathers or artificial feathers going around, which add a lot of drama. So people are attaching them to their sari pallus or to their blouses to add a little bit of flair and movement. And as long as they're artificial feathers, I'm all for it. Well, I really like feathers on women, and I think on evening gowns it really adds the luster, the softness and the finesse it needs. It reminds me of the 30s glam. So we are making capes, so you can either take it on or leave it behind to add a little bit of luxury, a little bit of softness to your sequin gowns. So are we likely to see a lot of feathers in the years to come from Indian couturiers as well? Sequins is to fashion, I guess, what, you know, like salt and pepper is to food. You can't do away with them, and they kind of have been around for centuries, and once done in different kind of textures and ways, it's just so lightweight, and you can work wonders and magic with it. In fact, sequins are big this season in India and internationally. High drama, glitter and maximalism are here to stay. There's no two things about it. I love the idea of maximalism. I mean, I'm all for subtlety when the occasion calls for it. But if it's an important occasion and you need to shine and dazzle and it's your special day, so you can be in a maximalist outfit, but your hair and makeup needs to be balanced. You can't be in a very loud tone of lipstick, for instance, and still have a over-the-top gold jacket, for instance, and expect to look great. Feathers, sequins, go for them. After all, feathers have been a part of maximalist fashion right from the Marie Antoinette days, and cut to 2022 end and start of 2023, they are back. In New Delhi, with inputs from Vaishnavi Gaharwar and Riya Modi, Shriti Narula for India Today. You know, this party season is just not complete unless and until you own a bomber jacket, whether with feathers, whether with sequins, bold prints. Go as bold as possible. This is the season of maximalism. What is the other trend we're picking up? Co-ords. If you live in warmer climates, then the resort wear co-ords are to die for. And if you live in, say, colder climates, then you could do lovely co-ords, or you could do anti-fit. We'll explain what that is. And guess what? A bomber jacket will really transform the way you look. We're explaining all those looks to you in the story to come. The invitations are here. The parties have begun. And while the quintessential little black dress for the ladies or a black on black look for the men can never go wrong, this season is throwing in a lot of co-ords that are chic and festive. After these two dull seasons and two dull lockdown years, we are all here to shine. Bling is on, and of course the cord sets in bling are the way to go this season. I think I love this trend of quads and monochromatic outfits. I think a person dressed head to toe in one color or one print, it's very elegant, it's very sophisticated, and I'm in love with this trend. I'm happy that it's doing the rounds and it's become like a go-to outfit. So the cord sets have this very fitted waistline with the box slit in the front and the backs are elasticated. It gives a very nice shape. It's considering the Indian body structure, which is more a pear shape. I think I prefer a solid cord set, like a black or a white or any matching color, but a cord set for a man is what I prefer. The matchy-matchy styles are in for men and women both.
Menswear oversized jacket looks really, really amazing as when it's worn as by some girls also, because what it does, it also creates extra room to layer, and at the same time, strong shoulders also create a sense of strength. So in that way, I think fashion does carry a lot of symbolic meanings. Bomber jackets are a huge rage and are super sexy alternative. Add bling to it if you are a true fashionista. Bomber jackets have always been really fashionable, and they always make a statement. An embroidered bomber jacket with a bit of, embellishment or with some print, it always makes a great statement. The bomber style has been here since the Motorcycle Diaries, from the James Dean era, and I think they're here to stay. I remember the bomber jackets from the movie Grease, the T-Birds, the John Travolta jackets, and I think right now it's a rage. So you can see printed jackets, sequin jackets, feather jackets. So bomber's here to stay, and I really like the style. If you live in colder areas, anti-party co-ords or a bling co-ord with bomber jacket can do the trick just right. Resort wear in India is still very, I would say, very in the kindergarten age, when I'm going to these clusters and when we're talking to these clusters, and then when we're sitting down with them, we say, I want to show you this because you're a designer. This is my Dadaji made. And then we're saying, okay, how can we make it something which is going to appeal to a today's millennial or a today's person or today's clientele or today's 2022 person, which was made in, let's say, 1980 or 1990. So this is how the prints are developed. And if you live in tropical areas, go ahead with resort wear co-ords or a bralette with a skirt. Basically, it is the season of massive experimentation. In New Delhi, with inputs from Vaishnavi Gaharwar, Chaiti Narula for India Today. So Vaishnavi Gaharwar and I have put together the looks of the Party Manual 2022. I'm sure you're ready to go out there and party, and go ahead, experiment with all these looks. Just to re-encapsulate what we've told you on the show. Bling is the new black. Go as blingy as possible, and just trust me, have fun with the maximalism too in your outfits. Feathers are in, sequins are in, the bomber jackets are an absolute rage, co-ords are a rage, anti-party fits are a rage as well. And guess what? The them lines are here. So go ahead and experiment with the gender fluid, gender agnostic lines too. And guess what? For me, I'm going there dancing. It is time to party for me, and I'm going to have some fun this party season. So I'm going to go dance. Thank you so much for watching the Fashion Edit. This is me, Chaiti Narula, signing off. See you again very, very soon with another edition. Bye.
Everyone's busy finding what's trending. You're busy finding out why. India Today, for those who research before reacting. Download the India Today app now. Our world is filled with many items made of plastic. We use plastics on an everyday basis. But how can you make plastic? And how can we recycle it? Most plastic can be made from hydrocarbons present in natural gas, oil and coal. They're made up of chains of molecules linked together called polymers. There are two main families of polymers. Thermoplastics, accounting for some 80% of global plastic consumption. They melt when heated and then harden when cooled. They can be recycled. Thermosets are substances that set permanently when heated. In 1950, the industry produced 2 million tons of plastic per year. Plastic can be made into a huge variety of useful products. But here's the rub. Millions of tons of plastic end up in the ocean and landfill sites every year. A plastic beverage bottle takes more than 400 years to degrade. Less than 10% of plastic waste is currently recycled. Why? Because of the chemical complexity of polymers. Recycling presents major technical and environmental challenges. So in the end, it can be cheaper to make new plastic than to actually recycle it. So what can be done to help solve the problem? Massive investment in so-called bioplastics. Natural polymers from agricultural waste and biodegradable plastics. The use of high-quality recyclable plastics, high taxes on plastics production, pressure on corporations to stop using plastic altogether and invest in alternative packaging. Welcome to Elections on My Plate, where our journey is starting in battleground Gujarat, here in Rajkot, in the heart of Saurashtra. The BJP has been a dominant party across Saurashtra and Gujarat now for 25 years. 2017, though, was different. The Congress won 29 out of the 48 seats here, riding on the back of the Patidar or Patel agitation. That agitation, though, has fizzled out, and there are new objective realities on the ground. The BJP has changed almost half of its candidates. The Congress seems to be focusing more this time on the Bharat Jodo Yatra. But there is a new X factor in the AAP as a potential disruptor. How will all this play out? Will the BJP complete a historic and record-breaking 7th consecutive win? Let's find out the mood across Saurashtra on Elections on My Plate. Now, like many other parts of Gujarat, Rajkot too wakes up early and I'm told sleeps early. But we have a long day ahead and a potentially calorie-infested day, which is why time for a morning walk. Let's go. How are you, Chief?
so nice to see you, sir. Nice, thank you. How come you're in Rajkot? I'm in Rajkot because elections are in the air. Yes. What's going to happen in the elections? Sir, don't ask me. Why? I'm a BJP fan anyway. So are you voting today for BJP or Mr. Modi or Bhupendra Patel? Not for Bhupendra Patel, but for Modi's leadership. But for Modi's leadership. क्या होगा election? What will happen in the elections? Definitely BJP. Definitely BJP. Huh? There is no option. I don't think so. Huh? Chief? BJP 120 plus. 120 plus. मोदी जी ने बहुत कुछ किया है और एकदम साफ सुथरा काम है। कांग्रेस के साथ तो या तो आम आदमी पार्टी के साथ उसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। तो कैसे किसी को कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई ऑप्शन ही नहीं है। इतने सालों से बीजेपी है कोई टफ कंपटीशन तो रहेगी। इस बार है टफ कंपटीशन। सबको दोनों पक्षों। कौन है मेन दो कौन है? भाजपा कांग्रेस। आम आदमी पार्टी सो है तो मेन कंपटीशन बीजेपी वर्सेस कांग्रेस. What's going to happen in the elections? You never know. It's BJP all the way. It's BJP all the way. Right. What? We are pretty satisfied. You're satisfied? What are you happy with? What is the best thing that has happened? Even before Narendra Modi became a PM, he was very good with Gujarat. He brought Gujarat into the world, like in the map. So we are like completely satisfied. You're satisfied. क्या fitness कर रहे थे? क्या करते हो? Running. Running? You need to lose little bit more weight, नहीं? हाँ? आप यहाँ राजकोट में क्या करें? रोटली शाक रोज खाते हो लगता है. एक्स्ट्रा. आपकी फेवरेट स्वीट क्या है? स्वीट सब फेवरेट ही है. स्वीट सब फेवरेट. कोई भी स्वीट दे दो. हाँ, श्रीखंड से लेके बासुंदी से गुलाब जामुन. आप थोड़ा उनको कंट्रोल करो. नहीं कर पाते. खाने दो. हाँ? स्वीट पे इंटरव्यू लेना है या इलेक्शन पे? अच्छा तो ये बोलो, हाँ, बेस्ट कौन है इलेक्शन में? क्या होगा? वैसे तो मोदी जी ही बेस्ट है ना. मोदी जी है पर इलेक्शन ये तो स्टेट का इलेक्शन है. वो मोदी जी तो दिल्ली में है. हाँ वो मगर सामने कोई बैठा ही नहीं है. सामने दिख रहा है आपको कोई? आम आदमी पार्टी कांग्रेस. हाँ आम आदमी पार्टी अभी आई है. लग रहा है कुछ ना कुछ नया होगा धीरे से. वोट किसको दोगे? मोदी साहब कल आके के गए ना क्या કે તમે ઘરે વડીલોને કહેજો કે મોદીભાઈ આવ્યા છે ને મારા નમસ્કાર છે તો પછી પતી ગયું ને. अरे पर मोदी जी तो दिल्ली में है. यहाँ तो भूपेंद्र पटेल है गांधीनगर में. सरकार किसकी है? मोदी साहब की. मोदी साहब की सरकार है तो वोट इज फॉर मोदी ओनली मोदी. क्या होगा इलेक्शन में? बस वही बीजेपी आएगी. कंफर्म ही है. कंफर्म है. कंफर्म 100%. ये राजकोट में बेटिंग बहुत चलती है तो कितने सीटें दे रहे हैं? नहीं 140. 140. आप आएगी. अरे वेरी गुड. वन ऑल्टरनेट व्यू. क्योंकि अभी चेंज की जरूरत है गुजरात को. चेंज की जरूरत है गुजरात में. आपको भी लगता है चेंज? और कांग्रेस भी आएगी. कांग्रेस आएगी ओछी कम संख्या होगी. तो ये नंबर 2 के बैटल में कौन आगे रहेगा, आप या कांग्रेस? अभी तो आप अभी आप लग रहा है. मैडम हाउ आर यू? इन सब लोगों में आप सबसे फिट हैं. है ना? नो जलेबी. नो गाठिया नो जलेबी. देखो दिस इज द डिफरेंस. आप लोग मेन, ऑल द मेन हियर आर ओनली हैविंग जलेबी गाठिया. ओनली ट्वाइस अ ईयर समटाइम्स. और वो भी थोड़ा सा ही पोर्शन. अच्छा यार टाइगर ये. अब बात करिए. मैं तो ले. हाँ आप सेल्फी ले रही है. सेल्फी कर रही है. मोदी जी भी सेल्फी बहुत लेते हैं. आप बताइए क्या होगा इलेक्शन में? साहब ये गुजरात है. यहाँ किसी को फ्री में कुछ नहीं चाहिए. हाँ साहब यहाँ पर तो लोग देने वाले हैं, लेने वाले फ्री में कुछ नहीं चाहिए. अच्छा? हाँ ये तो सेल्फ डिपेंडेंट और हार्ड वर्किंग बिजनेसमैन है गुजराती. तो कौन इलेक्शन में क्या होगा इसका मतलब? इलेक्शन में बीजेपी आएगी. एक बार गुजरात में आओ तो कोलेस्ट्रॉल छोड़ दो. मेरा भी जन्म अहमदाबाद में हुआ है तो मेरे पेट में जलेबी है कहीं ना कहीं. आप जुम्बा करते हैं? क्या है दिखाइए. कैसे ऐसे साला जुम्बा ऐसे. કેટલા કરો છો યાર? કેટલા કરો છો? ટીવીમાં જોયા છે. 50 50 ये भी नहीं. कैन आई ट्राई? अरे बाप रे. देखो आज इतना जलेबी गाठिया अभी खाना है तो ये सब करना पड़ेगा. 1 2 3 4 5. Okay, exercise done. It's time for a Gujarati breakfast. Jalebi Gathia awaits.
भाई एकदम मजा मस्त. How are you, Karan? Good to see you. Good to see you. Jalan bhai, kem cho? Fine, thank you. Kem cho તમે? Look at this table. I'm with 3 old journalist friends from Rajkot. Early morning, जलेबी, गाठिया, फाफड़ा. आप लोग हाँ ढोकला आप लोग कैसे करते कैसे? कोलेस्ट्रॉल का क्या होगा? What will? Why every early morning this kind of? I think this is must for every Saurashtrians. And if you go in every village, every city, you will find this. This is the main breakfast of every Saurashtrian. No cholesterol if you have this. No cholesterol? Yes, આમાં cholesterol નથી. This is not cholesterol. Very hygienic because આ એકદમ ફ્રેશ આવે છે, ગરમ આવે છે, એટલે આમાં કોઈ જમ્સ નથી લાગતા. There are no germs. ચણાનો લોટ હોય છે, બેસન. So it gives us protein. It gives you protein, yes. Deepak bhai? અને અમે છે ને રાજીભાઈ અમે આને આઠે પહોરની ઉજાણી કહીએ છીએ. Which means? બસ આઠે પ્રહર. क्या ने? सुबह अगर 3 बजे भी आप खा लो अर्ली मॉर्निंग, 5 बजे भी खा लो, लंच भी अगर नहीं करते हो स्किप करते हो ये खा लो तो ये देखा. एक बात मैं ऐड करूं, राजकोट और सौराष्ट्र के जो लोग हैं ना राजदीप, वो खाने पीने के शौकीन, इसलिए यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि सौराष्ट्रियन जो है वो दिल के भी समंदर है और पेट से भी समंदर है. मैं देख रहा हूँ दीपक भाई, पेट तो मजबूत है आपका. जलेबी, ढोकला, गाठिया, फाफड़ा, संभारा बोलते हैं. संभारा. These are of course the snacks that make Gujarat what it is. Too good. लीलो मरचा. अरे बाप रे, ये मिर्ची के साथ. Too good. और ऐसा कॉम्बिनेशन आप कहीं नहीं पाएंगे. देखिए ये नमकीन है, ये मीठा है, और ये जो मिर्च है वो तीखा है. तीनों टेस्ट एक प्लेट. इट्स अ फैमिली. You know, y'all have a coalition, it appears, on breakfast, but no coalition in your politics. In your politics. Gujarat is a state where whoever wins usually wins with a good margin. It's a clear majority. Okay, so let's talk politics. What's going to happen, Deepak? क्या होने वाला है इस बार? मुझे लगता है राजदीप, गुजरात की जब हम बात करते हैं तो यहाँ तो बीजेपी एडवांटेज है, बीजेपी का घर है. But what is the reason? Why is this the BJP's fortress? It almost seems to me as if this is a battle for who will be number 2 here. Aam Aadmi Party or Congress, number 1 is decided. Is that true? What is it? Why is BJP so strong? The thing is that there are so many things over here, but it seems like that there is no opposition. There is no opposition में unity नहीं है. वो लोग वहाँ पे आंतरिक इतना वो उनके अंदर मतभेद है. So people have also known that what is happening, and BJP being here since 1998. Clear majority one after the other elections, they have been just winning here. Since 95, in fact. 95 and 95 to 98. Yeah, that's right. So the basic thing you're telling me is BJP has got a solid 50% vote, 48 to 50%, and the opposition vote gets divided, right? Yeah. पर इसमें कहीं ना कहीं हम लोग जब आकलन करते हैं तो जैसे ये हिंदू स्टेट बन गया, हिंदुत्व का गढ़ बन गया. नॉट जस्ट बीजेपी, हिंदुत्व एंड मोदी जी. बिल्कुल बिल्कुल राजदीप, ये बात बिल्कुल सही है. 2002 के बाद हिंदुत्व की ऐसी लहर यहाँ पे छाई हुई है. मैं सिर्फ असेंबली की बात नहीं करता हूँ, पंचायत इलेक्शन हो, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो, लोकसभा के इलेक्शन हो, और लोकसभा में जो लास्ट नरेंद्र भाई जीते 26 से 26 सीट, और उसमें मार्जिन तो आप देखो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख मार्जिन से सारे कैंडिडेट जीते. तो यहाँ पे बीजेपी घर घर में ऐसे घुसा हुआ है कि लोग जब वोटिंग करने जाते हैं, दिमाग में कोई सवाल होता है, लेकिन जब वोटिंग करने के बाद कमल पे ही बटन दबता है. नो, बट 2002 is 20 years ago. That's right, but that is absolutely right. But if you go and see that year after year and term after term, BJP has kind of progressed because it's not just the fame, but it's also the hard work of the Karyakartas and the way they have reached door to door. The network over here in this state of BJP, I don't think it is anywhere else. Yes, I do agree with Karan. Hindutva is also a point, strong point, but you ask that why BJP is strong. The first reason is performance. They have performed. No, you see a Morbi tragedy. Is that an issue in this election or not? It is an incident, and it is a bad incident. But it is not the entire face of Gujarat. Face of Gujarat. No, the fact is it is not entire parameter of Gujarat. But it seems when it comes to elections, only Modi kaka. राजदीप डेवलपमेंट्स की हम बात करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट्स के मुद्दे पे ऊपर हिंदुत्व हावी हो जाता है, नरेंद्र मोदी पिक्चर में आ जाते हैं. आप बात समझो, कोई भी चुनाव में ये नहीं मानता हूँ कि डेवलपमेंट के मुद्दे पे लड़ा जाता है और जीता जाता है. यहाँ पे हिंदुत्व मुद्दा आता है. बहुत सारा हुआ, जैसे पेपर लीक हुआ, मोरबी ट्रेजेडी हुई, उससे पहले लट्ठाकांड हुआ, बहुत सारे चीजें हुई, लेकिन लोग जब
पोलिंग नजदीक आता है भूल जाते, सिर्फ उसको एक ही चेहरा दिखने को मिलता है, वो है नरेंद्र भाई। और नरेंद्र भाई के आने के बाद गुजरात में बीजेपी इतनी स्ट्रॉन्ग, पहले बीजेपी स्ट्रॉन्ग थी इधर, लेकिन नरेंद्र भाई ने उसको और मजबूत कर दिया है। I want to ask you that is this about Mr. Modi or is it about the BJP or Hindutva? नहीं, मेरा भी और एक दीपक भाई के साथ और some more points that कि अगर आप ये सब की बात करें, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी लोग बड़े परेशान थे, ये कोविड के टाइम भी लोग बड़े परेशान थे, लेकिन इसके दौरान भी, कोविड के दौरान भी इलेक्शंस हुए तो वो इलेक्शंस में 90% सीट्स बीजेपी को लोकल सिविक पोल्स में मिले। व्हाई वाज इट? देयर वाज नो हिंदुत्व, देयर वाज नो मोदी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट व्हेन इट कम्स टू विधानसभा और व्हेन इट कम्स टू लोकसभा, ऑफ कोर्स मोदी पिक्चर इज ऑलवेज देयर, बट मेरा इसमें माने there's a failure of opposition. To be very honest, failure. Okay, you are saying failure of opposition, Jalan bhai. This time there is Aam Aadmi Party. They are fighting this election. Congress used to be very strong in Gujarat. जो मुद्दे दीपक भाई ने कहे 1, 2, 3, 4 जो भी वो या तो मीडिया कहती है या तो थोड़े बहुत जो है वो चर्चा में रहते, लेकिन ये जो पूरी जो ड्यूटी जो पूरा फर्ज है ओपोजिशन का, पेपर लीक होते हैं या ये पुल टूटा, ये हुआ, अब ये पुल टूटा, आम आदमी पार्टी में से कौन वहां पर गया? बैठ जाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं गया। My point is that last time 2017 Patel agitation was here and Congress got more seats than BJP, 29 out of 48. Does that mean in a way now that agitation तो खत्म हो गया, हार्दिक भाई तो एजुकेशन वाले चले गए बीजेपी में? हाँ। और 2017 में आप देखो सिर्फ पाटीदार आंदोलन नहीं था, ओबीसी का भी आंदोलन चल रहा था, बहुत सारे फैक्टर्स इकट्ठा हो गए जिसकी वजह से एडवांटेज कांग्रेस को मिला। कांग्रेस नजदीक आई 77 पे पहुंची, लेकिन जो जादुई आंकड़ा होता है, जो फिगर्स होते हैं, उसमें कांग्रेस कभी पहुंच नहीं पाई। Let me ask you a controversial thing. Hindu Muslim, when a Hemanta Biswa Sarma in Assam goes and says that there will be more aftabs that will come up in the villages of Kutch if you don't vote for BJP, कहीं ना कहीं मुस्लिम को तो दुश्मन तो बना है 2002 के बाद। मेरे हिसाब से हिंदुत्व का मुद्दा यहाँ पे है और हिंदुत्व के मुद्दे ने बीजेपी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर दिया है राजनीति। So it's हिंदुत्व प्लस विकास प्लस मोदी। मोदी तो बहुत आगे है। नरेंद्र मोदी को देख के आप अगर चौराहे पे जाके किसी को भी पूछोगे राजदीप के गुजरात के सीएम कौन है, छोटे आदमी को कदाच नाम भी पता नहीं होगा, वो नरेंद्र मोदी को देख के वोट करते हैं। You are saying people won't know Bhupendra Patel, they are voting for Mr. Modi because he is more popular. So that's he is the prime minister. इसके बाद में काम पे कैसे जाते हो आप लोग? इसके बाद ही होता है ना, इसके बाद ही तो काम होता है। This is the morning charging thing. This is the morning charger. इसके बाद ही काम होता है। यार ये तो when in Gujarat, do as the Gujaratis do. As I said, I am born in Ahmedabad, so I have a particular fascination for the sweets of Gujarat. મારી ગુજરાતી કેવી છે? અરે આપની ગુજરાતી તો એક ગુજરાતી ને શર્મા में भी ગુજરાતી। અરે શું વાત કરો છો? નરેન્દ્રભાઈ સાથે તમારો એક ગુજરાતીમાં ઇન્ટરવ્યુ થવો જોઈએ। નરેન્દ્રભાઈ તૈયાર, ગુજરાતીમાં ઇન્ટરવ્યુ કરશું। ચાલો, that for another day, but it's time to hit the road. Before that, enjoy. Okay, we've come here to the Saurashtra University campus in Rajkot because remember there's an entire generation that has grown up in Gujarat and has only seen the BJP. In recent years, though, there has been student unrest and disaffection, especially over the issue of paper leaks. At least 20 papers have reportedly been leaked in Gujarat over the last 7 years, causing disaffection among thousands of students. It's a virus spreading across the country. But the question is, do such issues really matter at election time? Let's find out. कैसे हो? केम छो? हाँ मजामा? हाँ फॉर्म में? कोई एग्जाम है कि नहीं? एग्जाम है कि नहीं? खत्म हो गए। खत्म हो गए। ये पेपर लीक का क्या मसला है गुजरात में? इतने पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? गुजरात में पिछले 7 सालों से 20 से ज्यादा बार गवर्नमेंट भर्ती के पेपर लीक हो चुके हैं और हाल ही में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के बीकॉम और बीबीए सेमेस्टर 5 का 1 महीने पहले ही पर्चा लीक हो चुका है। स्टूडेंट यहाँ पर 7 साल से 20 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं।
तो आप लोगों ने कोई एजिटेशन किया, आंदोलन किया है कि नहीं? हमने प्रोटेस्ट किया, पर ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। और जो सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी का पर्चा लीक हुआ है वो बीजेपी वालों ने ही किया है, इसीलिए आज तक कोई पुलिस फरियाद भी नहीं की है। पिछले 15 दिनों से छात्र संगठन यहाँ पर लड़ाई लड़ रहा है सिर्फ पुलिस फरियाद करने के लिए, फिर भी कोई पुलिस फरियाद करने के लिए रेडी नहीं है। आप चाहते हैं कि इशू बने? आपको लगता है इशू बनेगा या लोगों के सामने और बहुत इश्यूज हैं? बहुत इश्यू है, ये भी बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि जो रोजगारी है वो भी मुद्दा है, और जो हमारी जो प्राइवेट जो है यानी कि जो अभी सब मोंघवारी है, हाँ। तो वो भी इश्यू है, और रोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि रोजगार मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। यंग जनरेशन बहुत है हमारे भारत देश में, तो वो भी एक नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, 25 ईयर्स से बीजेपी है यहाँ, आप खुश है कि नहीं बीजेपी सरकार से? बीजेपी सरकार ने जो नई नई योजनाएं बनाई है उससे हम खुश है, लेकिन जब लोग बच्चे पढ़ाई करते, जो बच्चे पढ़ाई करते टॉपर होते, उनको तो पेपर लीक हो गया तो उनका तो नुकसान ही होगा ना। जो लास्ट बेंच पे बैठते हैं वो लोग पेपर फूट जाए उनको जलसा आ जाएगा, उनको जलसा होता है, तो बैक बेंचर को जलसा होता है, टॉपर फंस जाता है। गुजरात में लेकिन ये तो मानना पड़ेगा 25 सालों से मोदी जी कहते हैं हमने विकास किया है गुजरात का, हुआ है कि नहीं विकास? गुजरात का विकास ऐसे देखा जाए तो हुआ है, लेकिन शिक्षण के क्षेत्र में उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए। तो कहाँ विकास हुआ है? पहले तो जो सरकार ने ये नई नई योजनाएं बनाई है उसमें तो सरकार के कुछ कदम आगे, तो रोड, इरिगेशन, इसमें अच्छा, रोड तो अच्छे बने हैं, अच्छे बने, आपको मानना पड़ेगा, रोड अच्छे बनेगा। तो आपका प्रॉब्लम है कि शिक्षा में उतना नहीं हुआ। जो मेन प्रश्न है शिक्षा में वो है पेपर का लीकेज। पेपर जो ये लीक कौन कर रहा है? ये पेपर लीक कर कौन रहा है? इसके पीछे कौन है? किसका हाथ है? सर, इसमें ऐसी बात है कि हमारे जो शिक्षण मंत्री है जीतू भाई वाघानी, हाँ। तो पहले प्रदेश प्रमुख थे, तब उनके ही लड़के को चिट्ठियों के साथ पकड़ा गया था चोरी करते हुए, और आज उसे 2 साल बाद शिक्षण मंत्री बनाया जाता है। तो इसमें आप ही सोचिए कि कौन जिम्मेदार हो सकता है। लेकिन आपको मानना पड़ेगा पिछले 25 साल से बीजेपी की सरकार यहाँ रही है, तो कुछ तो किया होगा कि यंग लोग अभी भी वोट करते हैं बीजेपी के लिए कि नहीं, ये तो आप मानते हैं कि नहीं? मैं उससे अलग मानता हूँ। आज भी यहाँ पर 5000 भर्ती के लिए 27 लाख बेरोजगार युवा भर्ती के फॉर्म फिलअप करते हैं। मान लो आज भी एक भी स्टूडेंट को भरोसा नहीं है कि कोई भी भर्ती के एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसका पेपर लीक नहीं हो सकता। ठीक है, 20 बार पेपर लीक हुआ, ईडी है, सीबीआई है, जहाँ जांच नहीं करनी होती है वहाँ जांच करते हैं, और जहाँ जांच करनी होती है वहाँ पर जांच नहीं करते। और आप जो तो आप कह रहे हैं ईडी सीबीआई ने पेपर लीक की जांच करनी चाहिए, उसको ही जांच करनी चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ कि इसका कनेक्शन मिनिस्टर और सीएम तक निकलेगा, ये दावे के साथ हम बोल सकते हैं। चुनाव में है आम आदमी पार्टी जो कहती है हम दिल्ली एजुकेशन मॉडल लाएंगे, कांग्रेस है जो कह रही है हम भ्रष्टाचार बंद करेंगे, और बीजेपी जो कह रही है हमें वोट दो हम विकास करेंगे। किसकी तरफ जाओगे? चुनाव के पहले तो दावे बहुत होते, सभी पार्टियों के दावे बहुत होते, चुनाव के बाद तो कोई देखने भी नहीं आता सर। कोई नहीं आता यहाँ, कोई देखने नहीं आता। अच्छा, मुस्लिम करके ही वो लोग वोट खींचना चाहते। हाँ? हिंदू मुस्लिम का डिबेट करते ही वो लोग वोट को अपनी तरफ, हिंदुओं के वोट को, मुस्लिमों के वोट को अपनी तरफ की। तो आप कह रहे हैं यंगर स्टूडेंट्स की कोई सुनता ही नहीं है सर। तो आप नहीं चाहते ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति? मुस्लिम का राजनीति नहीं चाहते आप, बस एजुकेशन और असली मुद्दे। एजुकेशन और एजुकेशन, चलो, इंडिया का फ्यूचर ही एजुकेशन है ना। चलो, वेरी वेल स्पोकन यंग मैन, इंडियाज फ्यूचर इज एजुकेशन। हम देखेंगे, विल सी इफ दिस बिकम्स एन इलेक्शन इश्यू एट ऑल। फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू ट्रैवल टू मोरबी, where there's another issue that we want to look at. Okay, now before I leave Rajkot for Morbi, which is about 60 kilometers away, there's one pit stop I have to make, because you can't come to Rajkot and not go to Rasik Bhai Chevda Wala for my favorite Gujarati Chevda. Come with me. Boss, क्या है? सब है कि नहीं? चूड़ा छे कि नहीं? बिल्कुल है सर। अरे ऑल द वैरायटीज ऑफ चूड़ा। ये कौन सी आपकी ग्रीन चटनी? अरे मेरी फेवरेट। और वेफर? ये नेट वाली जाली वाली वेफर है। जाली वाली वेफर, ग्रीन चटनी, स्पेशल चूड़ा। स्पेशल चूड़ा। आप लोग स्नैक्स बहुत खाते हो, स्नैक्स, गुजराती स्नैक्स। क्या करोगे विदाउट स्नैक्स इन गुजरात? इसको क्या चटनी में ना, चटनी में डाल के मस्त, बहु गम्यू।
મૌજ. શું કહો છો તમે ગુજરાતીમાં? ફર્સ્ટ ક્લાસ માટે. બહુ સારું લાગ્યું. બહુ સારું લાગ્યું. इलेक्शन में क्या होगा? जो देश की बात करेंगे वही आगे बढ़ेंगे. जो देश की बात करेंगे वही आगे करेंगे. वेरी गुड. राजू भाई has now brought me not just ढोकला but some patties also. क्या है स्पेशलिटी इस पैटीज का? पैटीज में क्रिस्पी और उसका मसाला और चटनी उसका कॉम्बाइन है. टू गुड. हाँ, नमकीन. लेट मी ट्राई. पैटीज और पैटीज गुजराती स्टाइल. टू गुड. No one makes namkeen as well as the Gujaratis. Enjoy the patties. I'm off to Morbi. You're watching Elections or Patties on my plate. Maja! October 30th, 2022 is a day the people of Morbi town will not easily forget. It was a Sunday, a few days after Gujarati New Year, and a large crowd had gathered to celebrate at the Jhulta pool or the swinging bridge, the century-old bridge, which is iconic here in this town. The bridge collapsed and at least 135 people died. The bridge collapse has exposed administrative failures and municipal misgovernance. The issue may not resonate across Gujarat, but in election season, the bridge collapse is a shadow that looms large. How will it actually play out on the ground? Let's try and find out. Come with me. કેમ છો કૃષ્ણકાંતભાઈ? કેમ છો? કૃષ્ણકાંતભાઈ, द मंदिर नेक्स्ट टू द ब्रिज, ही इज द पुजारी. आप बताइए उस दिन क्या हुआ? सर ये झूलता पुल जो है करीब 6:30 बजे करीब गिरा था. हाँ. ठीक है. 6:30 को. हाँ. तो यहाँ पे हमारे आजू बाजू में रहने वाले सब लोग, हाँ. पीछे एक मकरानी वास है, ये दरबागढ़ एरिया है, खत्रीवाड़ एरिया है, मोरबी 2 है, मतलब जितने लोग हैं मोरबी में रहने वाले, मतलब अगल बगल में जिसको जो मतलब कामगिरी में वो लोग कर सकते थे वो सब लोग उन लोगों ने किया है. और बचाव कार्य में बहुत से लोगों को बचाया गया है शुरू में. तो आपके सब लोग वहाँ चले गए और लोगों को बचाया आप लोगों ने? जी सर, मैं था, ये मेरा दोस्त है, ये भी था साथ में. जब ये हुआ तब मैं इसी दरवाजे पे बैठा था. अच्छा, इसी दरवाजे पे आप बैठे थे? तो आप लोग सब गए वहाँ और लोगों को बचाया कि नहीं? हाँ, सबको बचाए. और कितने लोगों को बचाया आपने? वो तो सर मालूम नहीं. 100-200 लोगों को तो अपने हाथों से हमने निकाला था. सबने मतलब हाथों से निकाला, यहाँ पे लेके आते थे, एम्बुलेंस में डालते थे. मोरबी शहर के सभी लोगों ने मदद की, लोगों की बहुत से लोगों ने, सब लोगों ने मदद की. कुछ लोग पानी में कूद गए कि नहीं? बहुत से लोग. हमारे यहाँ पे जो पुराने एमएलए थे, हाँ. कांति भाई अमरोतिया, हाँ. वो खुद यहाँ पे बचाव कामगिरी में लगे थे. 2-4 पुलिस वाले जिनको पता चला था वो सब लोग यहाँ पे कामगिरी में लगे हुए थे. बहुत से लोगों को बचाया हुआ है सर. लेकिन किसको आप जिम्मेदार किसको ठहराते जो हुआ? सर अब जिम्मेदार तो क्या बोले, गलती तो सबकी है, एक की गलती नहीं है. बहुत से लोग, अब जब पता है कि इतनी सारी भीड़ हो चुकी है, ठीक है, तो उसमें जाने की इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं थी. हम भी यहाँ पे रह रहे इतने टाइम से, ठीक है, तो हम साल में एक बार जाते और कम भीड़ होती है तब जाते. पर डर था कभी कि ये ब्रिज इस तरह से कोलैप्स हो सकता है? लोगों में डर था कि नहीं? लोगों में डर नहीं था, लेकिन हम लोगों को तो डर था. जब ये घटना हुई तब किसी ने ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है. सब सवाल ही नहीं था. नहीं, अभी क्या है कि चुनाव आता है, इलेक्शन. हाँ ना, नहीं, ये मुझे बताओ, इसका कोई चुनाव पे असर होगा? नहीं होगा. कुछ असर नहीं होगा ना. और चुनाव की बात ही मत करो. क्यों? चुनाव का प्रश्न नहीं था.
मानवता का था। मानवता का था, चुनाव का कोई प्रश्न नहीं, चुनाव से हमको कोई लेना देना ही नहीं है। लोग कह रहे हैं कि जो जिम्मेदार था उसको कुछ ना कुछ सजा होनी चाहिए। तो उसको सजा होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। नहीं, किसको? ये जो ओरेवा वगैरह है, कंपनी वाले कोई भी हो जाए। हाँ, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं इसका कोई चुनाव पे असर नहीं होगा? चुनाव पे आप लोग वोट देंगे? इसमें डालने का ही नहीं है ना सर। नहीं तो चुनाव ये थोड़े बीजेपी वाले ने, कांग्रेस वाले ने, आम आदमी वाले ने, किसी ने किया है, ये तो अकस्मात है। अच्छा, ये आखिरी बताइए, अभी तो चुनाव, अभी तो ये हो गया घटना, आपने कहा हिंदू मुसलमान एक थे, अभी भी रहेंगे क्या एक मोरबी में? ऐसा रहेगा तो रहेंगे। हाँ, ऐसा रहेगा ना। हाँ, ये यहाँ पे जो काम किया ऐसा रहेगा ना, सब एक ही रहेंगे। आपका नाम? जीतू भाई। તમારું નામ? જાડેજા જુવાનસિંહ। તમારું? મહેશભાઈ। મહેશભાઈ, તમારું નામ? કેબીસી બચ્ચન। તમારું નામ કેબીસી બચ્ચન? હા, કેબીસી બચ્ચન શું? હા, નયો નામ છે તમારો? અમિતાભનો ફેન છો તમે? There are many grieving families here in Morbi even now. I've come to one such home where at least 4 people lost their lives. Jagdish bhai, કેમ છો? જગદીશ ભાઈ એ મારો બાબો મોટા. અચ્છા. મહેશ ભાઈ મારો પુત્ર હતો અને એનો બાબો યુવરાજ અને આ ભાઈનો બાબો ગિરીશ. तो कितने 3 लोग मर गए आपके फैमिली के? आपका बेटा? मेरा बेटा, उसका आपका भाई और उनका भी बेटा? मतलब मेरा बेटा કેટલો વર્ષનો હતો તમારો બેટો? कितने साल का था आपका बेटा? वो एक 10 साल का, गिरीश का, जगदीश भाई का बाबा 10 साल का था। और आपका? और मेरा महेश भाई का लड़का 12 साल का। 26 तारीख को गुजराती न्यू ईयर था, साल मुबारक था। साल मुबारक। उस दिन उन्होंने चालू किया और ज्यादा लोग आने दिए उधर। हाँ, जाने दिया। दोनों साइड में टिकट काटने लगा, उधर से न सामने से दोनों साइड के टिकट काटना चालू किया। आदमी दोनों साइड इकट्ठा हो गया और साथ में सब पुल पर खड़े रह गए। तो आप उनको जिम्मेदार ठहराते जो पुल, जो कॉन्ट्रैक्ट रखा, तो कंपनी वालों को जिम्मेदार ठहराते हैं? कॉन्ट्रैक्टर जो है म्यूनिसिपैलिटी वालों को, सिक्योरिटी वालों को? सिक्योरिटी वालों और जो कॉन्ट्रैक्ट रखा उसकी गलती है ना। एक साथ को आदमी इतना जाने दिया, दोनों साइड टिकट काटने लगा। આજે શું કહેશો તમે? સરકારને શું કહેશો? ગાંધીનગર में भी सरकार है, यहाँ मोरबी में है, क्या कहोगे उनको आप? हम क्या कहेंगे, हमारा तो सब कुछ चला गया, हम क्या करेंगे? वो 4 लाख दे दिया, बस खत्म सरकार। 4 लाख दिया है? 4 लाख और 2 लाख, 6 लाख मिला। हमारा तो सब कुछ चला गया ना। पिताजी महेश भाई, वो गिरीश का बड़ा लड़का है ना, उसी का लड़का। કેટલો વર્ષનો હતો? कितने साल का? 12 साल का? 7મું ભણતો હતો, 12 साल। 12 साल का? 12 साल का, वो 10 साल का, वो 4थी कक्षा में पढ़ता था। तो पिताजी दोनों को लेकर गए थे वहाँ? हाँ, हम तो यात्रा पर गए थे। आप यात्रा पर गए थे? वृंदावन से आगे निकला तब पता चला कि ऐसा फोन आया, पुल टूटा है। पर ऐसा क्या मालूम कि अंदर गिर गए पुल में, वो सुबह मालूम पड़ा। आप कह रहे हैं कि आपको ये पैसा मिला, और क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार और क्या कर सकती है? હવે सरकार तो क्या करेगी, हमको ही तो छूट गई कि कॉन्ट्रैक्ट वाले को पकड़ो, वो ही करेगा। पैसा શું કરું? ફસાડે મેં આ ગયા બસ મારા દીકરા જોઈ મારે पैसा लेके क्या मैं पैसा क्या करूं? चलेगा? पैसा क्या करूं? मारा દીકરા જોઈ મારે તમે ઇલેક્શનમાં વોટ આપશો? એ ચૂંટણી આવી છે, તમે જશો ઇલેક્શનમાં, જશો વોટ આપવા? હું તો કાઈ નથી જવાની, કે નથી જવાનો? નહીં જાઉં। તમે જશો વોટ દેવા? વોટ દેવા નથી જવાનું, નથી જવાનું? તમે પણ નથી જવાનો? ના, આમાં કે વોટ કેવી રીતે અમારે? तो आप दोनों वोट नहीं दे? हाँ, वोट देने कहाँ जाएंगे? आया था मोदी जी, खाली आश्वासन आपे, 2 मिनट खड़ा चला गया। मोदी आया था। पर प्रधानमंत्री भी क्या करे? प्रधानमंत्री क्या करेगा? नहीं, उनकी तो गलती नहीं है ना। उसका गलती नहीं है।
क्या बनना चाहोगी? आईएएस। आईएएस? अरे वेरी गुड। सिविल सर्विस की एग्जाम दोगी? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या कहें, आपको भगवान शक्ति दे। કેમ છો ટાઈગર? મજામાં તમે? તમારી ક્યાં ચાલ્યા તમે? કાંતિભાઈની રેલીમાં. Now, Morbi has been a BJP bastion for years. For example, all the 62 municipal councillors here are from the BJP. But in the 2017 election, the Congress won this seat against the backdrop of the Patidar agitation. The BJP, though, in the backdrop of the Morbi bridge tragedy, has switched its candidate. They've dropped the congressman who switched to the BJP and became a minister and gone back to their old war horse. Kantilal Amrithya, a 5-time MLA who's got a reputation of diving into the waters to rescue people during the Morbi bridge collapse, as a viral video showed. What makes Kantilal and the BJP tick? Let's find out. हमने आपका वीडियो देखा जहां आपने लोगों को बचाया जब मोरबी का हादसा हुआ, तो कहीं ना कहीं आपको पहले तो क्रेडिट देना चाहिए कि आपने जो किया. તમે જે કીધું ત્યાં જઈને મને ક્રેડિટ લેવાની જરૂર નથી. મારા ભેગા 150 જણા હતા, એને મારે આ ક્રેડિટ દેવાની છે. મારા ભેગા જે કામ કરવા માટે બધા હતા ત્યાં, એને ક્રેડિટ આપવાની. એક મને કહો, આ ચૂંટણી છે અને ચૂંટણીના પહેલા આવી મોટી ઘટના થાય છે, એનો કઈ અસર થશે ચૂંટણી ઉપર? કોઈ કુદરતી આફત આવી છે, હા, એની દેશના વડાપ્રધાન મોરબી કમિટી કરી નાખી છે. કમિટી કરીને એનું 100% સારી રીતે જેને ભૂલ કરી એનું રિઝલ્ટ આવશે. नहीं, जिम्मेदारी कोनी છે? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जिम्मेदार तो જે કમિટી કરી એ જવાબ દેશે ને એ નિર્ણય આવશે. BJP has invited me for some puri shaak. I can't say no. The BJP doesn't always invite us in Delhi. But Morbi, ઊંધિયો છે. ઊંધિયો मिक्स शाक. मिक्स शाक, मिक्स वेजिटेबल. मिक्स्ड वेजिटेबल और पूरी. ઊંધિયો નથી बोलता તમે એને? ઊંધિયો. बीजेपी प्रेम से खिला रहा है, मैं क्यों कहूँ? मैं गुजरात के मेहमान है, हमारी फर्ज बनती है. चलो, थैंक यू मैडम. हाँ, मस्त है ઊંધિયો. आपको चेयर चाहिए? देखो, मेरा अभी तक इतना बुढ़ापा नहीं आया चेयर का, आएगा. गुजराती हॉस्पिटैलिटी बीजेपी स्टाइल. नरेंद्र भाई, તમે જો છો ને? From the BJP to the Congress headquarters. कैसे हो आप लोग सब? अरे आप लोग बिल्कुल मेरा इंतजार कर रहे हो? अरे पर वहाँ बीजेपी ऑफिस में तो बहुत भीड़ है. यहाँ रैली चल रही है कांग्रेस की. हम में मानते हैं, रैली में नहीं, हर घर जाएंगे. आप हर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर. जो भारत पर बीजेपी वाले बहुत बड़ा रैली कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग उनके सब आ रहे हैं यहाँ मोरबी में. किराए का आदमी नहीं है हमारे पास, किराए का आदमी नहीं रखते. वो किराए का आदमी के साथ बैठे है. हमारा कार्यक्रम डोर टू डोर चल रहा है. मोरबी की दुर्घटना की बात कर रहा है, सब बात करके डोर टू डोर जा रहे हैं. पर बीजेपी कह रही है ये दुर्घटना कोई इश्यू नहीं है इस इलेक्शन में. इस इलेक्शन में है विकास. या मोरबी का कुछ भी नहीं. आप भी यहाँ निकले, रोड पर निकले. हाँ, आप भी रोड पर निकले, रोड पर देखेंगे मोरबी में कुछ भी विकास नहीं है. पर इतने सालों से तो बीजेपी जीत रही. 2017 में आप जीते जब पाटीदार एजिटेशन था. अब हार्दिक पटेल भी चले गए बीजेपी में. इश्यू वो नहीं है. आज जो गुजरात के अंदर जो 2022 का जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं दोनों पार्टियां, आप देख लो गुजरात के अंदर या तो पूरे देश के अंदर, आप विकास के नाम पे एक तो ये जीरो है बीजेपी. दूसरी बात ये, अरे पर इतने सालों से जीत रही है. यही तो कह रहा हूँ आपको. तो उन्होंने 27 साल में जो गुजरात में उनको गुजरात वालों को दिया क्या? Interestingly, the Congress candidate here, Jayantiben Patel, has lost 6 times.
but he's still contesting. He still believes he has a chance. 7वां बार लकी होंगे. सोरा जी जा रहे हैं, उसकी सभा चल रही है, मोदी जा रहे हैं. चलो कोई आदमी नहीं, देखो. चलो, okay, all the best. Okay, thank you. Okay, now you can't come to this part of Gujarat and not have a good classic Gujarati thali, or to be more specific, a Saurashtra Kathiawadi thali, Thacker style. After all, the show is Elections on My Plate. Come with me. Aha. કેમ છો? મસ્ત. કઈ થાલી લો છો, ગુજરાતી કે પંજાબી? ગુજરાતી. હા, ગુજરાતમાં ગુજરાતી જ ના ખાવાનું. ચાલો, ગુડ. કેમ છો? તમારી થાલી બહુ ફેમસ છે. હા, કઈ કાઠિયાવાડી સૌરાષ્ટ્રવાળી થાલી? ગુજરાતી સૌરાષ્ટ્ર કાઠિયાવાડી. ચાલો, મને થાલી આપો. શું મળશે થાળીમાં? હા, ઊંધિયો, મિક્સ વેજીટેબલ, બટાટા, પંચકઠોળ.